મહારાષ્ટ્રના ડોંબિવલીમાં એક શરમજનક ઘટના સામે આવી. એક શિવસેના કોર્પોરેટર દ્વારા મહિલા ડોક્ટર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ થયા છે. હોસ્પિટલમાં એનઆઈસીયુ બેડના મામલે થયેલા આ વિવાદે હવે રાજ્યવ્યાપી સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ ઘટના બાદ મહારાષ્ટ્રના તબીબી સમુદાયમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. શિવસેના શિંદે જૂથના નગરસેવક રમેશ મહાત્રે દ્વારા એક મહિલા ડોક્ટર અને હોસ્પિટલના સ્ટાફ સાથે મારપીટની સમગ્ર ઘટના હોસ્પિટલમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ. આ ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં રાજ્યભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો. શિવસેના ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ અને વિપક્ષ तरफ આ ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડવામાં આવી. सरकार के जो भी आमदार है या वहाँ के जो कॉरपोरेटर है वो गुंडागर्दी वहाँ पे कर रहे हैं. डॉक्टर के ऊपर जो भी वहाँ पे हुआ वो गलत चीज़ था, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ पे स्पेसिफिकली बताया था, जेन्युइनली वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे जगह नहीं है, प्रेग्नेंट महिला है, बच्चा है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. यहाँ पे आईसीयू में जगह न होने के कारण अगर कॉम्प्लिकेशन आती तो आगे जाके माँ या बच्चे को वहाँ पे तकलीफ हो सकती है. इसलिए आप अभी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाइएगा और फिर बाद में हम देखेंगे क्या करना है. तब वहाँ पे एक कॉरपोरेटर, सत्ताधारी कॉरपोरेटर वहाँ पे आता है, महिलाओं को, मतलब एक पुरुष जो मेल कॉरपोरेटर है वो महिलाओं को वहाँ पे मारता है, डॉक्टर को मारता है. ये बहुत गलत चीज़ है, ये निषेध करते हैं और हम डॉक्टर के साथ हैं. तो आप सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप डॉक्टर को जो मार रहे हो, वो भी महिला डॉक्टर को मार रहे हो, तो सरकार वाले जो एमएलएज है, जो सत्ता में है, वो अगर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो बहुत गलत चीज़ है. ये निषेध करने की जरूरत है. आप सत्ता में हो ना, 4 साल सत्ता में, उसके पहले 5 साल सत्ता में थे, पैसा बहुत ज़्यादा हद तक वहाँ पे खर्चा किया गया, तो वहाँ पे क्यों ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई, क्यों फैसिलिटीज़ इम्प्रूव नहीं हुई, क्यों वहाँ पे मनुष्यबल या जो डॉक्टर्स है या नर्सेस है पूरी क्षमता में वहाँ पे क्यों नहीं दिए गए, ये भी प्रश्न हम कर सकते हैं. I have asked the government and I have asked the Chief Minister to take action, not only to arrest that corporator Ramesh Mhatre of the Minde Gut, but also to disqualify him from the post of the corporator, arrest him and parade him across Dombivli and Kalyan, so that everybody knows that you cannot attack anybody like this, especially a doctor or a nurse, be it a female doctor or a male doctor or a nurse. The problem is, or the question was simply that the doctors very respectfully asked the pregnant lady to shift to a different hospital, so that if the premature baby needs an NICU bed, the lady would get that, because the NICU beds in this hospital were fully occupied. What was the reason for this escalation? What was the reason for this fight? Now the bigger question is, even if the Chief Minister wants to arrest this corporator, even if the Chief Minister wants to disqualify this corporator, can he and will he do that? Because his hands are tied, because the central BJP stands with Eknath Minde and not with Devendra Fadnavis. ડોંબિવલીની એક મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલમાં નવજાત શિશુ માટે એનઆઈસીયુ બેડની ઉપલબ્ધતાને લઈને વિવાદ જોવા મળ્યો. આ દરમિયાન કોર્પોરેટર રમેશ મહાત્રે પોતાના સમર્થકો સાથે ત્યાં પહોંચ્યા. વિવાદ એટલો વધી ગયો કે કોર્પોરેટરે પોતાનો પિત્તો ગુમાવ્યો અને મહિલા ડોક્ટર અને મેડિકલ સ્ટાફ પર હુમલો કર્યો. महाराष्ट्र राज्य में डॉक्टर सेफ नहीं है, आदमी सेफ नहीं है, सब अंधाधुंधी कारोबार चालू है. इधर इनको लगता है कि हम मेजॉरिटी में आए तो कुछ भी करें, कायदा से डरते नहीं है, कायदा किसे में रखते हैं. अभी वहाँ पे डॉक्टर को मारना अच्छा नहीं, और शूटिंग देखा हमने, हाथापाई करना गलत है. कुछ भी नहीं तो डॉक्टर है. डॉक्टर अब भगवान को अभी देखते नहीं, लेकिन डॉक्टर को ही भगवान के रूप में देखते हैं. गुस्सा आता है तो मारपीट करने का क्या, मारपीट नहीं करना है, उससे सोल्यूशन है, कंप्लेंट करो. उनका अभी पूरा महाराष्ट्र में उनका वन साइड सत्ता है, वहाँ पे बोलो उनका लाइसेंस कैंसिल करो, लेकिन मारना गलत है. रमेश मात्रे, a corporator from the KDMC, Kalyan Dombivli Municipal Corporation, who is also a member of the Eknath Shinde Shiv Sena. He along with his goons are seen on CCTV footage entering a KDMC hospital and beating up lady doctors, male doctors, nurses, healthcare workers. How can you beat up lady doctors? How can you beat up ladies? You have no shame. If there was a problem, you could have sat with them, found a solution. Violence is not the solution. Just because you are affiliated to a party that is in government and so-called power, you cannot take law in your hands. You have to set an example by following the law. You have indulged in violence and beaten up ladies. Shameful. सत्ते की गर्मी आ गई है इन्हें, सत्ते का नशा आ गया है.
आय वॉन्ट टू टेल दिस म्हात्रे कॉर्पोरेटर, तुम्हाला लाज वाटत नाही? महिला डॉक्टरांना मारता? शरम करा, लाज करा. अँड नाव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन एकनाथ शिंदे, the police, and Mr. Devendra Fadnavis. Mr. Eknath Shinde should immediately remove this man from his party. The police should take suo motu action, file a case against this man and arrest him. This man needs to be arrested. CM Mr. Devendra Fadnavis, who is also the Home Minister, should set an example. He should get in touch with the police and make sure that this Matre is arrested. Nobody is above the law, whether you are a common citizen or you are with a political party that is in power or any political party. Nobody is above the law. Mr. Eknath Shinde and Mr. Devendra Fadnavis need to walk the talk now. સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે કોર્પોરેટર અને તેના સાથીઓ સ્ટાફને ધમકાવી રહ્યા છે અને તેમની સાથે અભદ્ર વર્તન પણ કરી રહ્યા છે. આ ઘટનાને પગલે મેડિકલ એસોસિએશનમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો. ડોક્ટરો પર થતા આ હુમલાઓના વિરોધમાં મહારાષ્ટ્રની સરકારી હોસ્પિટલોના ડોક્ટરોએ અનિશ્ચિત મુદતની હડતાલનું એલાન કર્યું. આ હડતાલને કારણે હોસ્પિટલમાં ઓપીડી સેવાઓ સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગઈ છે. સામાન્ય દર્દીઓ ભારે હાલાકીનો સામનો પણ ભોગવી રહ્યા છે. ડોક્ટર અને મેડિકલ સ્ટાફની માંગ એ છે કે આરોપી નગરસેવક સામે કડકમાં કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે. આ બાબતે શિંદે સેનાના નેતા શ્રીકાંત શિંદેએ પણ ટ્વીટ કરીને પક્ષનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું અને લખ્યું કે પક્ષ આ હુમલામાં સામેલ કોઈ પણ વ્યક્તિને બચાવશે નહીં. તો બીજી તરફ શિંદે સેનાના नेता સંજય ગાયકવાડે કોર્પોરેટર રમેશ म्हात्रेના બચાવમાં આવ્યા. आओ જોઈએ તેમણે શું કહ્યું. जब आता है, जब कोई घटना वो अपन देख नहीं पाते हैं, कोई पेशेंट का निश्चित रूप से हाल वहाँ पर ख़राब होगा. कर्मचारियों ने, डॉक्टर्स ने उसकी तरफ उसको नेग्लेंसी की होगी, उसकी तरफ देखा होगा नहीं या ट्रीटमेंट किया नहीं होगा. वो तड़प रहा होगा, मर रहा होगा, और अपने कोई नज़दीक का इस तरह से तड़प रहा है, मर रहा है और कोई पेशेंट को देख नहीं रहा है, तो स्वाभाविक रूप से किसी को भी गुस्सा आता है. लेकिन गुस्से में कुछ लोग हाथ उठाते, कुछ लोग कंप्लेंट करते. सो म्हात्रे ने जो हाथ उठाया वो तो गलत ही है, बट गुस्से में उनसे ये शायद हो गया है. આ ઘટના બાદ હોસ્પિટલ સત્તાવાળાઓની ફરિયાદને આધારે પોલીસે કોર્પોરેટર રમેશ म्हात्रे અને તેમના સમર્થકો સામે FIR નોંધી છે. આ હુમલાના કેસમાં આશરે 4 આરોપીઓ સામેલ છે, જેમાં એક મહિલાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આઈપીસીની સંબંધિત કલમો હેઠળ આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ये मारपीट के इसमें करीबन 4 आरोपी है, उसमें एक महिला आरोपी है, स्थानिक नगर सेवक रमेश म्हात्रे, और अन्य 3 आरोपी जो अभी हमने अरेस्ट किए, उसमें अक्षय कारंडे, राजेश पवार, प्रमोद निकम, ऐसे करीबन 5 आरोपी है. इसमें स्थानिक नगर सेवक रमेश म्हात्रे, अक्षय कारंडे, प्रमोद निकम, राजेश पवार और एक महिला. किस चीज को लेके ये मारपीट हुई थी, क्या वजह थी? एक महिला पेशेंट शासनगर हॉस्पिटल में आई थी, वो उपचार के ऊपर से बहस होकर जो पेशेंट के रिश्तेदार थे उनके साथ आरोपी लोग आए. उन्होंने ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है वो सलून के और एक महिला डॉक्टर और नर्स के साथ बदतमीजी की, उनको मारपीट की, गाली गलौज और धमकियां दी गई. तो ये घटना के कारण डॉक्टर वैभव साळुंके के इन्होंने कल विष्णुनगर पुलिस स्टेशन यहाँ एक केस दर्ज किए, गुना नोंद किया गया है. ये गुने में राइट के सेक्शंस लगे गए और धमकियां देने थे और मारपीट, ये सेक्शंस लगे गए BNS के. और जो स्पेशल एक्ट है महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा अधिनियम 2010, इनके सेक्शन 3 और 4 ये भी ये केस में लगे हुए. अभी पुलिस का जो गार्ड है तो उसकी जो अपनी इंक्वायरी करेंगे, उसके उस पर जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे.